रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप, ये शेप में सर्कुलर होते हैं एंड दे आर डिप्रेशन इन सेंटर. दे कंटेन्स अ रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. इनके अंदर रेड पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की वजह से ही दे अपीयर्स रेड, उसी की वजह से ही ये रेड दिखते हैं. दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आरबीसीज के थ्रू ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है. नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स. White blood cells are irregular in shape. That means they are not exist in any particular shape. इनका कोई भी शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप में एग्जिट नहीं करते हैं. सेकेंड, दे डू नॉट कंटेन्स एनी पिगमेंट, हैंस दे आर कॉल्ड कलरलेस. इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता है. दे फाइट एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स डैट इंटर्स अवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स चला जाता है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स चला जाता है, तो WBC ही उनसे फाइट करते हैं एंड दे कैन डिस्ट्रॉय दिस जर्म्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दी डिजीज़. नेक्स्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल इरेगुलर शेप्ड ऑफ सेल्स. ये सारे सेल्स से सबसे ज़्यादा स्मॉल होता है एंड दे आर इन इरेगुलर शेप्ड एंड दे आर ऑल्सो कलरलेस. कलरलेस होता है क्योंकि इसके अंदर भी कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है. ब्लड प्लेटलेट्स स्टॉप द ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट इन द वुंडेड एरिया. अगर हमारी स्किन कट जाती है तो उसमें से ब्लीडिंग निकलती है, वो ब्लीडिंग कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से ही जो ब्लीडिंग हो रही होती है उस पर क्लॉट बन जाता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है. क्लॉट मीन्स सॉफ्ट थिक मास. देन नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स. ब्लड मूव्स थ्रू our body in tube-like structure called blood vessels. There are 3 types of blood vessels. First, arteries, second, veins, and third is capillaries. What are arteries? Arteries are the largest blood vessels in our body. They transport blood from heart to other parts of the body. They have thick elastic walls and hence blood flows in them with high pressure. Next, capillaries. On reaching the tissues, arteries divide to form smaller and smaller vessels which eventually form a network of extremely thin tubes called capillaries. Exchange of materials such as nutrients, chemical substances and gases between blood and cells occurs in capillaries. The next topic is heart. Heart is a very important organ of a living body because it sends oxygen and nutrients to all parts of our body and carries away unwanted carbon dioxide and waste products from our body. Here we see what is the location and size of the heart. Heart located at the center of our chest cavity with a tip pointed to the left side. The size of the human heart is approximately the size of one's clenched fist. Fist मतलब मुट्ठी, जो heart का size होता है वो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है. Then what is the structure of heart? Heart is divided into 4 chambers. The upper 2 chambers are called atria or auricles. The lower 2 chambers are called ventricles. The atria and ventricles are separated by valves. Valves are the muscular flap that allows the blood to flow in only one direction. A partition called septum separates the left side of the heart from the right side. How the blood flows in heart takes place. Blood enters the heart through 2 large veins, the inferior and superior vena cava, emptying oxygen poor blood from the body into the right atrium
As the atrium contracts, blood flows from your right atrium into your right ventricle through the open valve. When the ventricle is full, the valve shuts. This prevents blood from flowing backward into the atrium while ventricle contracts. As the ventricle contracts, blood leaves the heart through the pulmonic valve into the pulmonary artery and to the lungs where it is oxygenated. In the left side of the heart, the pulmonary veins empties oxygen-rich blood from the lungs into the left atrium. As the atrium contracts, blood flows from your left atrium into your left ventricle through the open valve. When the ventricle is full, the valve shuts. This prevents blood from flowing backward into the atrium while the ventricle contracts. As the ventricle contracts, blood leaves the heart through the valve into the aorta and to the body. Next is heartbeat. How we can define the heartbeat? Heart works by contracting and relaxing its muscles. The contraction and relaxation follows a rhythm called heartbeat. A heartbeat is one complete cycle of contraction and relaxation. Our heart normally beats 70 to 80 times every minute. One way of measuring our heartbeat is by placing our hand against our chest and counting. Another way of doing this is by measuring pulse. Pulse is the thrombic sensation of an artery at each beat of the heart. It can be felt where an artery is close to the surface of the skin, such as the wrist or neck. Doctors use an instrument called the stethoscope to measure our heartbeat. अभी तक हमने पढ़ा कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस. अब हम पढ़ते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है, वो प्लांट्स में कैसे होता है. सो द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हियर इन प्लांट्स need to transport water, minerals and food materials from one part to another. So how the transportation of water and minerals takes place in the plants? Water and minerals are absorbed from the soil with the help of roots. After absorption, they move up the stem to the leaves through tube-like tissues called the xylem. Absorption and transportation of water is continuous process. This is possible due to the transpiration. So what is the transpiration? This is the process by which water evaporates from the leaves. That means the loss of water from the leaves of the plant is known as the transpiration process. This creates a suction force which pulls the water upwards through xylem. This is similar to sucking water up a straw. The transpirational pull is strong enough to lift water several meters above the ground.